दीदी जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम दीदी जी। थैंक यू दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपका मेरी लाइफ में स्वागत है। थैंक यू दिवाकर भैया जी। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमो दीदी धन्यवाद, दिवाकर भैया धन्यवाद। गुड 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 दिवाकर भैया।
थैंक यू दीदी जी, थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सुपर 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 भैया जी, थैंक यू भैया जी। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। थैंक यू भैया जी, 7 लोगों की वॉचिंग चल रही है, प्लीज सब लोग कमेंट करिए, जो लोग लाइव में आए हैं, और लाइव सेशन को लाइक करिए।
थैंक यू संतोष यादव भैया। मंजू बहन आपकी आईडी है संतोष यादव वाली? भैया खाना खाओ ना। ब्लू दे दो मंजू बहन। अरे यार वो राम खा लिया। राम राम राम। खिचड़ी बनवाया है यार। मंजू बहन ब्लू दे दूं संतोष यादव वाली आईडी पर? मंजू बहन कमेंट करके बताओ आपकी है ना ये आईडी? संतोष यादव भैया। मंजू बहन आपकी आईडी है संतोष यादव वाली? थैंक यू संतोष यादव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं कोयरीपुर से हूँ दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया जी, आपको मेरी लाइव में स्वागत है भैया। लाइक तो आप पहले ही डन कर दिए हैं। राधे राधे भैया जी। दिवाकर भैया चले गए हमको लगता है। दिवाकर भैया का कमेंट नहीं आ रहा है। ना ऐसा छोड़ दिया ना। हाँ भैया मुझे पता है, मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ इस टाइम। देख रहे हो, मुझे पता है। संतोष यादव न्यू वीडियो जरूर देखिए, ब्लॉग बनाया हूँ, ये वाला वीडियो मैं देख रही हूँ आपका। एक दिन पहले का डाला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप भी लाइव आते हैं भैया? अच्छा रुको, मैं तुरंत कर रही हूँ आपका सपोर्ट भैया। देखिए आपका 64 हुआ कि नहीं हुआ भैया? आप देखिए आपका 64 हुआ कि नहीं, चेक करिए। 63 से 64 कर दी हूँ। अच्छा अच्छा भैया, आप मुझे जितना समय दोगे भैया, मैं कल आपको दोपहर में उतना समय रिटर्न कर दूंगी। भैया और लोग को किसको जुड़वाऊं? और लोग अभी आए ही नहीं हैं। मेरे पास 2 मोबाइल है, एक से मैं पहले से आपसे जुड़ी थी और एक से अभी जुड़ गई हूँ। एक पे मेरी लाइव ही चल रही है।
एक से तो उसी दिन जुड़ी थी जब आप जुड़े थे मेरे साथ, मेरी इस वाली से, तो रिटर्न की थी तुरंत। आपकी वीडियो देखी तो तुरंत पहचान गई। रमो दीदी आप अपनी रियल आईडी से आइए तो ये भैया से सपोर्ट करवाऊँ आपका। ठीक है भैया, ठीक 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 भैया। आप जितना समय दोगे भैया मैं कल आपके उससे ज्यादा समय आपको रिटर्न कर दूंगी। रुको देखो, ये जो अभी ये चल रही है ये सपोर्ट आईडी है जिसमें अच्छा लिखा है। ये दीदी अभी अपनी रियल आईडी से आ रही है तो आप उनको सपोर्ट कर देना और दीदी आपको इस वाली से सपोर्ट कर देंगी। ये देखो आ गए जिस पर ये लिखा है, आप इस पर सपोर्ट करिए, आपको तुरंत रिटर्न मिलेगा भैया। मैं आपको ब्लू दे रही हूँ। आप ये देखो रम्मो की रसोई लिखा है, आप रम्मो की रसोई को सपोर्ट करिए, आपको तुरंत रिटर्न मिल रहा है भैया। वो ऊपर जो अभी तक कमेंट आ रहा था आरजे म्यूजिक, उससे आपको तुरंत रिटर्न मिलेगा। अच्छा ठीक है दीदी जी, ठीक है। अलका बहन बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी लाइव में स्वागत है मेरी प्यारी बहन, दिल से धन्यवाद। हाँ हाँ बहन, आप जब आप आती हैं तो आपसे पहले आपको लाइक आ जाता है बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपसे पहले लाइक आ गया था अलका बहन। अलका बहन ये बताओ, आप अपना लाइव कोई राइट टाइम रखी हो कि नहीं? अभी आपको स्कूल से ही नहीं फुर्सत मिलता। हम लोग घर में रहते हैं तो बहन इतना परेशान हो जाते हैं, स्कूल आने जाने में तो और आपके पास टाइम नहीं रहता होगा, भाग दौड़ लगी रहती होगी। भैया ब्लू दे दी हूँ, रमो की रसोई को आप ज्वाइन करिए, दीदी आपको तुरंत रिटर्न करेंगी। दीदी आप इनको भैया को ज्वाइन कर लो, आपको ज्वाइन कर लिए हैं। रमो दीदी ये भैया आपको ज्वाइन कर लिए हैं, आप इनको रिटर्न दे दो दीदी। कमेंट करते रहिए भैया तो ज्वाइन कर लेंगे दीदी। ज्वाइन ही करने गई है भैया शायद, तभी कमेंट नहीं आ रहा है। अलका बहन आप चली गई क्या? आपको कमेंट नहीं आ रहा है? दीदी ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज्वाइन कर लेंगे, रिटर्न दे दीजिए दीदी। भैया जो भगवान राम की डीपी चल रही है इसी से आपको अभी ज्वाइन की हूँ, कमेंट गया है देख लेना। ठीक है दीदी जी, ठीक है दीदी। क्लास में जाओ। बात सब्जेक्ट तो बोल।
ये जो टिकट कहाँ है ये वाले ये सब भी ये टेमेंटो 2 का वेलकम वेलकम भैया, वेरी गुड वेरी गुड। ये भैया जो राम भगवान की फोटो इसी से ज्वाइन की हूँ अभी। आपको जो सपोर्ट की हूँ ये राम भगवान वाली डीपी का कमेंट देख लेना भैया। मैं ये सब नहीं लिखती हूँ, ज्वाइन कर लिया है, जुड़ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिखती। बस वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ भी कमेंट कर देती हूँ। नहीं भैया, बस ऐसे कुछ लिखी नहीं हूँ, वैसे हार्ड शेप में से जो हार्ड शेप होता है वही डाल दी हूँ, रेड कलर का जो हार्ड शेप रहता है। सबसे ऊपर वाली वीडियो चेक करिए आप। मतलब फिर से कर दे रही हूँ, दूसरी वीडियो कर दे रही हूँ, क्या जाता है। लो पहली वाली पर भी डाल दूँ, लो दूसरी वाली पर भी डाल दे रहे हैं। 3 दिन पहले वाली पर संतोष यादव का संस्कृत में परोपकार का निबंध जरूर सुनिए, इस पर भी दे रही हूँ कमेंट। पीएचडी में गया लेकिन के प्रिया 32-33 साल के हैं। तब सेठ मामा को बात का पीएचडी तो का पीएचडी करे जाता है का? हाँ? दीदी आप रिटर्न कर दी होगी। अरे ये कौन बाय बाय कौन कर रहा है? अनु मिश्रा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया रानी, बहुत दिन बाद आई। अनु बिटिया बहुत दिन बाद दिखी, बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया रानी। यस भैया धन्यवाद, 9 लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। अच्छा ब्लू दे रहे हो भैया, ब्लू। भैया ये बताइए, सुजीत भैया आपसे बात करना था। मैं आपकी लाइव में जब आती हूँ तो इसको मोबाइल की आवाज़ बंद करके तब करती हूँ, मेरी लाइव चलती रहती है, बात नहीं हो पाती है। ये बताइए भैया मेरा मोनो होने वाला ऐड कैसे लगाया जाता है? भैया हाफ मोनो हो गया है शायद, उसमें ऐड वाला लिख कर आ रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐड वाली लाइव कैसे करनी पड़ती है भैया? यस भैया कमेंट करके बताओ क्या हो रहा है। सब कुछ नहीं, बस आप सबसे बातें कर रही हूँ अनु बिटिया। अब तुम क्या कर रहे हो बिटिया रानी? स्कूल का होमवर्क हो गया? खाना पीना हो गया? यस भैया ब्लू तो दे दी, उसके बाद चले गए क्या भैया जी आप? दवाई करने का क्या बने क्या नहीं।
राधे राधे भैया जी, राधे राधे दीदी जी, राम राम। स्कूल का होमवर्क हो गया? ठीक ठीक बिटिया रानी, खाना पीना अभी नहीं हुआ। चलो ठीक है, खाना पीना भी थोड़ी देर में होने ही वाला होगा। राम राम दीदी जी, राम राम। थैंक यू भैया जी। यस भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यस भैया। बहन राधे राधे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी बहन, आप कैसी हो? अन्नू बिटिया हमारी, हाँ लिख कर भेजे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। हर हर महादेव ममता दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी। हाँ दीदी, 8:34 पर आई हो, देख रही हूँ। जय श्री गणेश की जय हो, श्री गणेश की जय, श्री गणेश बिटिया रानी। और अम्मा लोग क्या कर रही हैं बिट्टो? हाँ बहन, खाना बन भी गया और सब लोग खा भी लिए हैं। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी। ठीक है दीदी जी, ठीक है। ममता, हाँ दीदी पहचान रही हूँ। ममता दीदी प्लीज मुझे से जुड़ जाएं, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। ममता दीदी देखो, अलका बोल रही है आप मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। दीदी ममता को ज्वाइन कर लो या आपको रिटर्न कर देंगी। ब्लॉगिंग वाली ये वाली दोनों आइडिया है। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक। देख रही हूँ दीदी, दोनों देख रही हूँ। हाँ दीदी पहचान रही हूँ। वो इंडियन वाली पर तो पहले ही जान गई थी, आपके कमेंट करने से पहले ही। दीदी लेकिन लाइक एक ही मिला है। ममता दीदी लाइक एक ही मिला है, दोनों से नहीं आया है। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाए, भूल गई है कि कभी कभी जो दिक्कत होती है, दिक्कत हो गई है। और अन्नू बिटिया, अम्मा लोग कैसी हैं? ठीक है दीदी जी, आप किचन में हो तो आप खाना बनाइए। लेकिन दीदी आप किस वाले से जुड़े हैं? आप वाले से, ब्लॉगिंग वाले से जोड़ लो, मुझे रिटर्न कर दूंगी। अच्छा दीदी, उस वाले से कमेंट ही नहीं आ रहा है ना आपका? कमेंट तो इस वाले से आ रहा है। और अलका भी नहीं दिख रही है। ममता दीदी आप एक ही लाइक मिला है। चली गई है शायद दीदी, अलका दिख नहीं रही है। अलका अगर लाइव में हो तो ये देखो, दीदी की सॉरी आईडी से जुड़ जाओ। थैंक यू अन्नू बिटिया, धन्यवाद बिटिया रानी। हाँ दीदी, कोई दिख ही नहीं रहा है जुड़ने वाला।
कौन से सेक्शन में हूँ? खाना बना रही हूँ। ठीक है दीदी जी, ठीक है, आप बनाइए, खाना बनाइए, कोई बात नहीं दीदी। आप बना रही हैं, मेरे यहाँ बन गया है, सब लोग खा लिए, मैं भी सोच रही हूँ खा लूँ, खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। बिटिया ये गेम ओवर मत लिख कर भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू बिटिया। अन्नू बिटिया लाइक नहीं की हो रानी। अन्नू लाइव को लाइक कर दो। थैंक यू दीदी जी। देखो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं और वाचिंग 300 कर रही है। वाचिंग कभी कायदे से वाचिंग नहीं शो करती। हाँ दीदी मुझे पता है, सबके लाइफ में यही होता है। अरे कभी कभी तो 8-8 10-10 लोगों का कमेंट लगातार आता रहता है, फिर भी 0 वाचिंग शो करती है। दुपट्टे सब 0 रखा है। 0। हेलो। हाँ थैंक यू दीदी जी, ममता दीदी धन्यवाद, इंदु दीदी धन्यवाद। दीदी थोड़ा फोन आ गया है, आवाज बंद कर रही हूँ इसी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका बहन लाइव में आने के लिए और लाइक डन करने के लिए, मेरी प्यारी बहन। जय श्री राम, जय श्री राम। अलका बहन धन्यवाद। अलका बहन आप ये देखो, इंडियन ब्लॉग वाली आईडी जो है उसको ज्वाइन कर लो, आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये देखो अलका वो अंशिका की आ रही है, अंशिका कमेंट आ रहा है, अंशिका को कर लो ज्वाइन। आप खुद ही सामने से खुद ही कर लिया करो, आपको रिटर्न मिल जाएगा। पहले चैनल पर जाओ, चैनल पर जाकर वीडियो पर क्लिक करो, वीडियो पर क्लिक करके जो आज और कल का लेटेस्ट वीडियो रहता है उस पर कमेंट करो, तुरंत रिटर्न मिलेगा आपको। मैं तो यही करती हूँ बहन। मुझे ब्लू अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, दे रही हूँ मैं।
के दे दी हूँ अलका बहन, दे दी हूँ मैं। उतनी देर से आपको बोल रही हूँ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, और ब्लू देने पर ब्लू पर ध्यान ही नहीं दी कि ब्लू नहीं है तुम्हारे पास। अंशिका को ज्वाइन कर लो। और ये देखो इंडियन ब्लॉग, और थोड़ा नीचे को ममता दीदी इंडियन वाले से एक बार फिर से कमेंट कर दो। अलका फिर आ गई हैं, तो तुम बीच बीच में चली जाती हो अलका बहन। कमेंट अभी करवाई थी मैं दीदी से, तब तुम चली गई थी। अब ब्लू दे दी हूँ, अंशिका को ज्वाइन कर लो। और उनको ममता दीदी का देखो इंडियन ब्लॉगिंग करके एक अभी आएगा। अच्छा अच्छा, अंशिका बहन बहुत पहले जुड़े हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं बहन। दीदी तो ऑन करके रख दी है, फिर इंडियन ब्लॉगिंग करके उनका चैनल है। हाँ दीदी लाइक डन हो गया। थैंक यू दीदी जी लाइक डन करने के लिए, धन्यवाद दीदी जी। अलका वो मेरी ही है। मैं खुद ही तुमको सपोर्ट कर दे रही हूँ, तुम मत जुड़िए। कल तुम रिटर्न कर देना, मैं खुद ही तुमको ज्वाइन कर रही हूँ। अलका बहन रुको, मैं खुद ही तुमको ज्वाइन कर रही हूँ। कमेंट करो अलका बहन, कमेंट करो। कमेंट आपका बहुत ऊपर चला गया है। ये देखो सुरो की सरगम से कमेंट जा रहा है तुम्हारे पास। बहन मैंने आपकी लाइव में ऑन करके रखी हूँ। और अच्छा ठीक है, काम कर लो, काम कर लो। मैं तुमको देखो गिफ्ट दे रही हूँ, अभी देख लेना मैसेज। और मैं जुड़ गई हूँ ये सब नहीं लिखती हूँ, बस ऐसे वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट कर दूंगी। जैसा वीडियो रहेगा वैसा कमेंट रहेगा। ये देखो हरतालिका तीज वाला जो वीडियो डाली हो, मैं ठीक हूँ भैया जी, आप कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद भैया लाइव में आने के लिए और लाइक डन करने के लिए।
लाइव में आने के लिए, लाइव सेशन को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया जी? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ड्यूटी करते हो फिर भी इतना कीमती समय निकाल कर मेरा सपोर्ट करने आते हो भैया, इसलिए आपको और सबसे ज़्यादा धन्यवाद भैया जी। हम बहनें तो घर में रह के इतना परेशान रहते हैं, आप भैया आप लोग ड्यूटी के साथ साथ भी सपोर्ट कर देते हो। चलो ठीक रहना भी चाहिए भैया जी। टेबल्स विद उत्कर्ष, ये क्या है? कहाँ क्या है भैया, क्या पूछ रहे हो, ये क्या है? टेबल्स भैया ऐसा क्यों दिख रहा है? ऐसा की हूँ इसीलिए दिख रहा है, वाइटनेस की हूँ इसीलिए वाइट वाइट दिख रहा है। टेबल्स भैया लाइक डन कर दो, लाइव में आए हो तो। वही क्यों किया हो? हमको अच्छा लगता है इसीलिए की हूँ। धन्यवाद भैया जी लाइक करने के लिए। टेबल भैया आपको बोल रही हूँ। छोटा बालक भैया आप चले गए क्या? अगर समय हो तो और सपोर्ट कर दीजिए भैया। समय ना हो तो कोई बात नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है भैया, आप ड्यूटी करते हो, जॉब करते हो। यूपी इंडिया से हूँ भैया जी। टेबल्स भैया मैं यूपी इंडिया से हूँ। मेरी बोली भाषा लैंग्वेज से खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यूपी इंडिया से हूँ। और यूपी में प्रयागराज से हूँ। यूपी में प्रयागराज से हूँ भैया। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर से हूँ। यूपी में इंडिया में यूपी, यूपी में प्रयागराज, प्रयागराज में श्रृंगेरपुर से हूँ। जहाँ भगवान राम पैदल चलकर आए थे वहीं पर मेरा घर है भैया। तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र पावन धरती पर मेरा निज निवास है भैया जी। जय हो सीताराम की। हम लोग भैया गंगा घाट के रहने वाले हैं, हमारे नल में भी गंगा जल निकलता है। राम राम दीदी जी, राम राम। हाँ भैया मैं भी यही सोचती हूँ, कुछ अच्छा कर्म की थी तभी
इतनी पावन धरती पे मेरा जन्म हुआ है। मेरे यहाँ मेरे गांव से हर घर से सब लोग रोज गंगा स्नान करने जाते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी और नई बहू को छोड़कर सब गंगा स्नान करने जाते हैं। थैंक यू अंशिका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका बहन। हाँ अंशिका बहन, मुझे पता है आप आन हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब भैया, दिल से धन्यवाद साहेब भैया, लाइव में आने के लिए और लाइव सेशन को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। योगी जी अच्छा सीएम है आपके यहाँ। हाँ आप भैया, आपने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया और अपने विषय में तो कुछ बताया ही नहीं। आप कहाँ से हो भैया जी? जब आपने बोला कि योगी जी बहुत अच्छे सीएम हैं आपके यहाँ, तब मुझे ये मैं सोची कहीं हो सकता है आप भी यहीं के हो, इसीलिए नहीं पूछी। लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि मुझे पूछना पड़ा कि आप कहाँ से हो भैया। बहुत ही अच्छे सीएम है भैया। अच्छा अच्छा भैया, आप पुणे महाराष्ट्र से हैं। आप पुणे महाराष्ट्र से हैं भैया, तब तो आप श्रृंगवेरपुर को पता नहीं, आप जानते हैं कि नहीं जानते श्रृंगवेरपुर? भैया सभी जितने चीफ मिनिस्टर हैं सभी अपनी अपनी जगह, सब अपने अपने कार्यकाल में सब ठीक ठाक हैं। मायावती जी भी आई थी तो लखनऊ का पूरा काया पलट कर दी थी। हर जगह पूरा सीवर लाइन बनवाई थी, अच्छी अच्छी रोड सारी रोड चौड़ी करवाई थी, जगह जगह पे अच्छे अच्छे पार्क बनवाई थी। मायावती जी भी अपने कार्यकाल में अच्छा काम की थी। मैं सिर्फ लखनऊ की बात बता रही हूँ और पूरे यूपी की विषय नहीं जानती। न्यूज़ देखती नहीं, जो आँख से देखूँ सिर्फ वही बता रही हूँ। अखिलेश जी भी आए, वो भी अपने कार्य में अच्छा और कार्यकाल में अच्छा काम किए। यूपी 100 की सुविधा करवाए और जो है एम्बुलेंस की सुविधा करवाए, और लखनऊ में जो है वो क्या करवाए, उसमें तो मायावती जी जो है शिलान्यास की थी मेट्रो का। और जो है पूरी बन के तैयार हुई अखिलेश जी की सरकार में, और अपने जाते जाते अखिलेश जी उसका शिलान्यास भी कर दिए, अरे उद्घाटन भी कर दिए थे। शिलान्यास मायावती ने किया और उद्घाटन किया था अखिलेश जी ने, और चली थी योगी जी के सरकार में। तो अपने अपने समय में सभी सरकारें अच्छी थी।
बाकी मेन बात यह है जिसकी सत्य, हम तो कहते हैं को नृप होए हमें क्या हानि, चेरी छान ना हो रानी, चाहे जिसकी सरकार आए चाहे जिसकी सरकार जाए, हमको भैया किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको भोजन नहीं मिलेगा। मैं सरकार वारकार के और राजनीति के चक्कर में बहुत कम पड़ती हूँ। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो सरकार हमको रोटी देने नहीं आएगी, और हम फ्री का राशन नहीं खाते हैं भैया कि हम सरकार की दुहाई दें। योगी जी ने राम मंदिर बनवाया भैया, सबसे बढ़िया पुण्य कार्य किया। और मैं आपको पहले ही बता दी कि मैं न्यूज नहीं देखती हूँ, मैं जो आंख से देखती हूँ सिर्फ वही बोलती हूँ। भैया मैंने पहले ही आपको बोल दिया, तो मेरे लिए सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी दाल रोटी सेकते हैं भैया। कोई भी मिनिस्टर हो, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। राम मंदिर बनवाए योगी जी, ये काम बहुत ही बढ़िया किए। हाँ भैया पूरे नहीं, देखिए भैया पूरे देशवासियों ने बनवाया है, लेकिन जो है अगर योगी जी की सरकार ना होती तो राम मंदिर ना बनता। ये 100% सत्य बात है। अगर योगी और मोदी की अगर सरकार ना होती राम मंदिर ना बन पाता भैया। नहीं भैया, होशियारी की क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकला सिस्टर, दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ भैया जो सत्य है। देखिए मैंने अभी मेरी बहुत ज्यादा एज तो है नहीं, मैं मायावती के समय से जैसे जानती हूँ, उससे पहले कौन सीएम था मुझे ये भी नहीं पता है। हो सकता है शायद मुलायम सिंह रहे होंगे, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। पूनम बहन 11:30 पर आएंगे आपकी लाइन में। ठीक है दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी, शुभ रात्रि दीदी जी। ठीक है जाइए दीदी जी, अभी आप मोबाइल को भी थोड़ी देर रेस्ट दे दीजिए, कि हो सकता है आपका समय हो गया। नहीं नहीं, अच्छा भी समय नहीं हुआ है। ठीक है दीदी जी। हाँ भैया, कोर्ट के माध्यम से तो बना है, मुझे पता है कि कोर्ट के माध्यम से बना है, लेकिन मैंने आपसे पहले बोला ना कि भैया जिसकी सत्ता उसी की दुहाई। अगर राज्य से लेकर केंद्र तक सरकार न होती तो कोर्ट भी वही करता है जो सरकार चाहती है। अगर मोदी जी की जगह सरकार किसी और की होती ना तो कोर्ट का फैसला भी उसी पक्ष में आता। खैर छोड़िए, हम लोगों को इन सब बातों से क्या मतलब है।
हाँ, मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या वासियों पर गोली चलवाई, बट मैं उस समय भैया मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। मैं उस समय पैदा तो हुई थी लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। पैदा क्या, मैं 10-12 साल की थी। कल्याण सिंह की सरकार में मुझे सब ये सारी जानकारी है, लेकिन जो चीज़ मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती उसके विषय में बोलना उचित नहीं समझती। और मैं ये पहले ही बता दी भैया कि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में ही इतने सारे काम रहते हैं, ऊपर से ये यूट्यूब का चक्कर पाल ली हूँ, तो मेरे पास टाइम कहाँ रहता है। मैं बोली ना भैया, मैं पहले ही बोल दी कि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मैं इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ भैया। संविधान से ही चल रहा है भैया, तानाशाही से नहीं चल रहा है। देश संविधान से चल रहा है, संविधान तानाशाही से चल रहा है। देश तो संविधान से ही चल रहा है। लेकिन संविधान तानाशाही से चल रहा है। ट्रेवल भैया लिखे हैं, मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या वासियों पर गोली चलवाई और यूपी के लोग उन्हीं को वोट देते हैं। यूपी के लोग नहीं भैया, खास करके अयोध्या वाले उन्हीं को, इस बार तो अयोध्या वाले उन्हीं को वोट दिए हैं। चलो खैर छोड़ो, क्या मतलब है भैया, सबकी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, क्या करना है। भैया मैं यूपी इंडिया से हूँ, इंडिया में यूपी से हूँ, और यूपी में प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज से में मैं सिंगवेरपुर से हूँ। यूपी इंडिया, यूपी प्रयागराज सिंगवेरपुर से हूँ भैया जी। सिंगवेरपुर का वर्णन जो है रामचरितमानस में आता है, अयोध्या कांड में। जब भगवान श्री राम गए थे वनवास, तो केवट जी जो उनका पैर धुले थे, वहीं पर मेरा निज निवास है भैया जी। नहीं चलता तो संविधान से ही है भैया। हमारा संविधान ही बहुत उटपटांग है। पानी वाला बोतल कर देगा।
अरे मेरे राजा बाबू, मम्मा पानी बोतल डब्बा में दे सब लोग कमेंट नहीं आ रहा है। टेबल्स भैया लिखे हैं, देश संविधान से ही चलता है, कांग्रेस वालों ने उसका नाम बर्बाद कर दिया है।
ठीक है ट्रेवल्स भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना कीमती समय देने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि भैया जी। बाय बाय भैया जी, शुभ रात्रि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपकी रात्रि मंगलमय हो मेरे प्यारे भाई, शुभ रात्रि। थैंक यू अंशिका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका बहन। अंशिका बहन हमारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर दिया। मेरी लाइफ में भैया अगर कोई भैया लोग आते हैं तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इनके पास इतना कीमती समय होता है और अपना कीमती समय निकाल कर भैया लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं अपने सभी भाइयों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ भैया जी। ड्यूटी ऑफिस जॉब रहता है, इतना प्रेशर रहता है ड्यूटी का।
थैंक यू ममता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद ममता बहन। बाय बाय बहन, शुभ रात्रि मेरी प्यारी बहन, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम बहन, सीताराम, राधे राधे। बाय 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 बाय, शुभ रात्रि अंशिका बहन।
7 लोगों की वॉचिंग चल रही है, प्लीज सब लोग कमेंट करिए, जो जो लोग लाइव में हैं। 7 लोगों की वॉचिंग चल रही है, प्लीज सब। ठीक है दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। ठीक है दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने। बाय बाय दीदी जी, शुभ रात्रि दीदी जी। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है दीदी।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी भी तबीयत आजकल खराब चल रही है। चटनी बड़ी बढ़िया बनी है यार। सोना, चटनी बहुत मस्त बनी है।
उमा जी आपका लाइक एक ही मिला है, दोनों नहीं मिला है। अच्छा मिल गया, दोनों मिल गया। कुछ नहीं, लाइक लाइक नहीं शो कर रहा था, मिल गया है। लाइक के विषय में पूछी थी, लाइक नहीं मिला, मिल गया।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, दिल से धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन। अरे कभी कभी क्या होता है कि दिमाग में चलता रहता है कि लाइव लगाना है, किसी काम में लगी रहो कि ये कर ले वो कर ले, उतने में टाइम, घड़ी में टाइम देखो कि अच्छा अभी तो 8 नहीं बजा है, उसके बाद लाओ ये काम कर लें। वो काम करते करते समय निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है बहन। अरे कोई बात नहीं, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है बहन, हम लोगों के टाइम पास वर्क है, बच्चों का तो फ्यूचर है। कोई नहीं, इसमें माफी की और क्षमा कोई बात नहीं बहन। बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो देखो मेरी बहन भी कमेंट कर रही है कि मेरे साथ आज यही हुआ है। कभी कभी देखती हूँ अभी तो लाइट नहीं चली, अच्छा लाओ तब तक ये काम कर लूँ, वो काम करते करते आधा घंटा 1 घंटा कब का निकल गया पता नहीं चलता। फिर याद आता है अरे लाइट चल रही होगी। बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, रोज होमवर्क करवा दिया करो बहन, वो ज्यादा जरूरी है।
काजल बहन आप चली गई क्या? मैं देख रही हूँ। काजल बहन मुझे बीच में थोड़ा छपा गई थी, मैं जान नहीं पाई आप कब आई। अभी कमेंट देखी तो डीपी देखी तो मुझे लगा कि तो आप हैं। ठीक है बहन, ऐसे बीच बीच में कमेंट देती रहना। नहीं ऑन करके रख दो, कोई बात नहीं है। कल तो मैं आपको 1-1 घंटे बोली थी और मोबाइल ऑन करके रख दी, 3 से 4.5 घंटा का समय दे के तब आ गई। मोबाइल ऑन करके रख देती हूँ, भूल जाती हूँ। तीनों मोबाइल ऑन कर दी थी। लाइव खत्म हुई उसके बाद भी मोबाइल चल ही रहा था। थैंक यू त्रिपाठी उनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में आने के लिए और लाइव सेशन को लाइक करने के लिए। दिल से धन्यवाद त्रिपाठी जी। राधे राधे। काजल बहन की वॉचिंग शो कर रही है, कमेंट तो नहीं आ रहा लेकिन वॉचिंग शो कर रही है 8 लोगों की। बेटी है सासो तब यार जे करे हो, मुखियाई बैठी है सासो
सो तो बहुआ जे करे हो। सासु मोरे नौरंगिया के साध नरंगिया है खावैया। मेरे पति जी सो रहे हैं। मेरे पति जी ड्यूटी से आए, भोजन किए और उसके बाद सो गए। वो किसी की राह नहीं देखते हैं। और हम माँ बेटे अभी जग रहे हैं दोनों। वो ड्यूटी करके इतना थके रहते हैं बेचारे कि आते हैं, खाते हैं और अपना सो जाते हैं। हाँ, कष्ट वाली बात में कष्ट तो होता ही है, सभी को कष्ट होता है। हरे हरे काली जमुनिया तू फरी के घपसी जाती हो। जामुन तू का तोड़ने पिया उठे नयने धरे देखी थी हो। हरे हरे काली जमुनिया तू फरी के घपसी जाती हो।
जामुन तू का तोड़ने पियाऊ ते नयने भर देखीती हो। हरे हरे काली जमुनिया तू फरी के घपसी जाती हो। जामुन तू का तोड़ने पियाऊ ते नयन भर देखीती हो। हरे हरे काली जमुनिया तो फरी के घपसी गई हो। राजा भेज दी है आपन नौकर वायपना नहीं आए ने हो। हरे हरे काली जमुनिया तो फरी के घपसी गई हो। राजा भेज दी है आपन नौकर वायपना नहीं आए ने हो। हरे हरे सासु जेठनिया तू आपस में झगड़ी जाती हो। जेठी तू का छोड़ावन पियाऊ ते नयने भर देखती हो। जेठनी तू का छोड़ावे पियाऊ ते नयने भर देखती हो। हरे हरे सासु जेठानी तो आपस में झगड़ी गई हो। राजा भेज दी है लहुरा देवर वायपना नहीं आए ने हो। राजा भेज दी है आपन नौकर वायपना नहीं आए ने हो। हरे हरे छोटी ननदिया तू एक दिन गाँवने जाती हो। हरे हरे छोटी ननदिया तू एक दिन गाँवने जाती हो। अरे छोटी ननदिया तू एक दिन गाने गो। राजा भेज दी है डोलिया कहाँ रे वायपना नहीं आए ने हो। हरे सासु जेठानिया
गुड नाइट काजल बहन, सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
जागत ही दीदी, अबे जागत यही, सोई नहीं यही। ममता दीदी जागत यही।
ठीक है दीदी जी, ठीक है दीदी, आप लगा के सो जाए। ठीक है दीदी, ठीक है।
चल आप बैठा हूँ
Hmm.
गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अभी चलना है, क्या बजा है? 5 बजे चला जा आपके पास।